Here, if we continue our last topic was Arrhenius equation. The question could have been asked, derive Arrhenius equation. We know how to answer that now. Now one more question they are going to ask us, and I would like you to write it down over here. Define Arrhenius parameter. That's the first point. Second, derive, so not derive, give different methods, to derive their value. Then your answer starts from here. You'll have to write this. In Arrhenius equation, parameter A is called pre-exponential. You have to give the definition. Pre-exponential factor or frequency factor. EA is called energy of activation. Both of these factors are known as Arrhenius parameter. Is it fine? Definition वहां से चालू हुई. There are two methods to determine them. How many methods are there? Two methods. The first method is known as graphical method. First method is known as graphical method. In graphical method, what they do is, I had explained you earlier, you have one reaction. This reaction, let us perform it at temperature T1, and let's try to find out the rate constant K1 at a given temperature. Same reaction is being repeated at temperature T2 and find out the value K2, so as T3 K3 and T4 K4, and इसका log भी निकालो, इसका inverse निकालो, plot a graph. It is supposed to be a straight line. After plotting the graph, you will actually होगा कैसे मालूम है? जब आप वैल्यूज यहाँ पे डालोगे, आपको पहला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, सेकंड पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, थर्ड पॉइंट यहाँ पे मिलेगा. अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपकी लाइन इतनी ही होती है. It's this much only. Then use a scale and extrapolate it and get y-intercept. Get the value of y-intercept, and value of y-intercept always gives you, actually it is supposed to be log of a, not ln a. क्या होना चाहिए? Log of a. Is that understood? बराबर छे. You get the value of log of a and find out the slope. Slope से आपको मिलेगा minus EA upon 2.303 R, and from that slope you may find out the value of EA. So we found out both the values, both the parameters. One is energy of activation, second is A. बराबर है. तो graphical method एक method है. That's the first method we found out. बराबर ना बेटा? Okay, you may read that point afterwards. I'll give you time to read. Second method. Let me explain second method. Interesting method. What will we do? हमारे पास जो reaction है, at temperature T1, let's find out value K1. At temperature T2, let's find out value K2. At least two sets of experiment. You may go for the third also, but let's say we have done two of them. Now we had Arrhenius equation was like this: log of K equals to log of A minus EA upon 2.303 R into 1 upon T. Correct? That is our Arrhenius derivation. We will put these two values over here. ये दोनों values जो हमें मिली है, we'll substitute over here. Once we substitute, we get the two different equations. One is log of K1 equals to log of A E upon 2.303 R T1, and second जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? Log of K2 equals to log of A minus
Any doubt over here? Easy. Okay, now we have two equations. Equation number 1, equation number 2. Use again your mathematical skill, subtracting equation number 2 from, equation number 1 from equation number 2. We'll subtract equation 1 from equation 2. अच्छा, बाय द वे इन दोनों के अंदर ये टर्म कॉमन है. अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. एंड व्हाट डू वी हैव इज log of k2 minus log of k1 on left hand side. On right hand side, as I have already mentioned to you, this will get cancelled. बच गया है आपके पास वो ये माइनस EA. We are doing 2 minus 1, so minus EA upon 2.303 R 1 upon T2 minus EA correct or not? Okay, all of us we know log of k2 minus log of k1 is log of k2 upon k1. इन दोनों के अंदर ये वाली टर्म कॉमन निकलती है. नॉट ओनली दैट, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. तो मैं पहले उसको कॉमन ले लूंगा, EA अपॉन 2.303 R. पॉजिटिव टर्म कॉमन ली है, सो मुझे ये वाला पहले लिखना पड़ेगा. आई एम सॉरी, दोनों जगह पे T2 लिख दिया मैंने, माफ करना. यहां पे T1 है, यहां पे क्या है T1. 2 minus 1 क्या है, तो हम ये वाली टर्म को पहले लिखेंगे. सो यहां पे बचेगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2. हमारे पास एक अच्छा सा इक्वेशन मिल जाएगा. ना जरा ध्यान से मेरे साथ बताना, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था तो टेम्परेचर T1 पता था, वो टेम्परेचर पे K1 की वैल्यू हमको मिली थी. T2 पे K2 मिला था. लेट्स सी हमारे ये इक्वेशन में कितनी वैल्यूज हमारे पास है. K2 पता है, K1 पता है, ऑब्वियसली R पता है, T1 पता है, T2 पता है. जो बच गया अकेला वो है EA. सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ EA. यस और नो? पहला मिल गया एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. आपको एक बार EA मिल गया, देन यूज दैट EA एंड सब्स्टिट्यूट इन ईदर ऑफ दिस इक्वेशन. किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए. अभी इसके अंदर K2 पता है, EA पता है, R पता है, T2 पता है, बाकी रह गया. करेक्ट और नॉट? वी कैन डिटरमाइन बोथ ऑफ देम. दैट्स कॉल्ड okay mathematical skill calculation method. Correct or not? You can use that method. First is graphical method and second is okay कैलकुलेटिव मेथड. दोनों आपको लिखनी है. अगर 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया तो आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से समझाई गई है. यहां से अगर आप कंटिन्यू करते हो along with this graph, okay, I want you to read till here.